Hello students, this video is basically the part 3 of chapter 11, friction. So in this part we will be studying about the different type of friction, right? So what are the basically different type of frictions that you have to understand, right? The friction comes into picture the moment of force is being applied on a particular body, right? So it is not necessary whether the object is moving or not. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें कंसिडर दिस एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कई सारी बुकों का एक स्टैक लगा हुआ है. कंसिडर दिस एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट? सो इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स कंसिडरिंग इट एज अ होल ऑब्जेक्ट, यू विल से कि सर आप धक्का नहीं लगा रहे हो, आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आई एम अप्लाइंग बट इट इज नॉट मूविंग, right? Trust me, I'm applying force, but this object is not moving. So the moment, the time, or till the time, the force is being applied to a particular object, and the object is not moving. So the friction that will come into the picture is called as the static friction, right? As you can see over here. So till the time applied force is there, force is being applied on a body, and the friction value, which is not allowing the object to move, that time the value of friction is called as static friction. Now there comes another definition that is there in your book that is given as limiting friction. So what do we mean by limiting friction? So if you observe the particularly, right, specifically again, focus here. So I am applying. So till the time I am applying force, the object is not moving. But the moment I apply it, and you will see it will start moving. So the maximum value of the static friction, the maximum value of the static friction is called as limiting friction. अब सिंपल वर्ड में समझते हैं इसका मतलब क्या होता है. देखिए मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, राइट? फिर मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ, और राइट, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक ऑब्जेक्ट ना मूव करे उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, दैट टाइम विल से दैट द फ्रिक्शन विल बी ऑफ काइनेटिक, राइट? तो जब तक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, दैट टाइम द फ्रिक्शन दैट विल बी कमिंग इनटू पिक्चर विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन. अब काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोशन कंसीडर करें तो दो तरह का हो सकता है. फॉर एग्जांपल नाउ यू विल से क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, बुक्स हैं, ये मूव स्लाइड कर रही है, रोल कर रही है, यू विल से दे आर स्लाइडिंग, राइट? सो इफ द मोशन इज this type of this specific type, when there is a sliding side of type of motion, the friction that will be coming into picture is called as sliding friction, right? And when there is a sort of rolling motion, that time the friction will be called as rolling. For example, if you can see this chalk over here and I kept it like this, okay, so you can see that here the motion is of rolling type. So the friction that will be coming in contact, like coming in picture between the surface of the chalk and this ramp over here is called as rolling, and this type of friction that will be coming for this type of motion is called as sliding friction, right? Now that's it from this part. Now moving on to the next video.